to celebrate this victory of gaming and e-cricket across the world, we have your favorite rapper coming on stage. Please welcome the magician of words, जिसके रैप से सब करते हैं प्यार, जिसके शब्द है अंगार, जिसकी सोच है हथियार, the iconic EPR. Come on, everybody! The stage is yours. जिंदगी के हर एक लम्हा home celebrating, we are freeland. Holding ups and downs, hope we never stop believing. Circle up the clues, but किताब रखे open. Getting back up every single time we're broken. हजारों heartaches, chilling heartbreaks, gonna stargaze in the night sky, looking for a glimmer. बड़े पन्नों को जब पन्नों में हम रख के खाते सूरज को निकल के नए सुबह की ओर. रोज होता motivate, दोस्त करते elevate, negativity हटाए break होते barricades. ठोस है हरारे work load को संभाले control में हमारे सपनों को सच बनाए हम. Family की full support and the girl keeps on telling me to win and never fall back. Capturing the moments Kodak, much better to take your cameras but no flash. Look at मुझे मैं Iron Man, कवच मेरी मजबूत. और कभी जान बैरियर, इनोवेट न कोई किचू, yeah. और कभी मैं चंद्रशेखर सितारों में मशहूर. Or कभी Andrei Sapkowski's Wild Wolf and I'm in the mood. Cause I never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never ever lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never ever lose. Unbeatable, matchup of the element, man. You know my only competition, मेरी खुद ही खुद से. Pessimism ain't a fact and never breaking a sweat. ना पीढ़ियों से दूर भागो पीछे छोड़ regret you back. पूछे आंसुओं को गलतियों से सीखे हम. मुश्किलों की संगति में लड़के जीते हम. It ain't about the short term, but the long ones. बादलों पे लिखे legacy surviving storms, yeah. हर हाल में समंदर पार we go. Manifesting what we want, cause nothing's impossible. Underestimate no underdog, cause under pressure बनते ही जब हो आत्मविश्वास. आगे सीढ़ियों से गिरने का डर नहीं. नौफी सो जो होना है बराबर होगा. खाए ठोकरे जो होके हम जो फिर करें तो फिर से victory feel like Rocky Balboa. Look at मुझे मैं Iron Man, कवच मेरी मजबूत. और कभी जान बैरियर, इनोवेट न कोई किचू, yeah. और कभी मैं चंद्रशेखर सितारों में मशहूर. Or कभी Andrei Sapkowski's Wild Wolf and I'm in the mood. Cause I never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never ever lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never lose, never lose. Never lose, never ever lose. Alright, GPL, put your hands up. One time, make some noise for all the teams who are participating. Make some noise for the beautiful king. And one more time, make some noise for all the beautiful people who are present here. Oh yeah. Check it. You can play that. जिंदगी में जिम्मेदारियां भी कम नहीं. कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं. संग्राम जारी जब तक सांसें जाती थम नहीं. पर हम भाई जिससे कभी कोई गम नहीं. जिंदगी में जिम्मेदारियां भी कम नहीं. कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं. संग्राम जारी जब तक सांसें जाती थम नहीं. पर हम भाई जिससे कभी कोई सोचा नहीं था सपनों में अपनों से ही मिलेगा मुझे ऐसा धोखा. कि सच न हजम हुआ इतना वजन की पाकर सब कुछ मैंने खोया. कि फर्श पे बिखरी उम्मीदें, संघर्ष से निकले तरीके. सटल को अनर्थ में सीखे अर्थ मंजिल का. कोई गम नहीं, जिंदगी में जिम्मेदारियां भी कम नहीं. कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं. संग्राम जारी जब तक सांसें जाती थम नहीं. पर हम भाई जिससे कभी कोई गम नहीं. जिंदगी में जिम्मेदारियां भी कम नहीं. कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं. संग्राम जारी जब तक सांसें जाती थम नहीं. पर हम भाई जिससे कभी कोई. Let me see your hands up, everybody over there. Go like this.
Yes. धोखा है मेरे नगमों को कर्मों ने सदमों के पानी से भिगोया मैंने खुद को खत्म कर खुद से ही खुद में ही खुद को पिरोया कि दिल ने लड़ना सिखाया मैंने फर्ज को मेरे अपनाया और वक्त ने मुझे समझाया तो मंजिल का कोई गम नहीं जिंदगी में जिम्मेदारी अभी कम नहीं कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं संग्राम जारी जब तक सांसें जाती थम नहीं पर हम पाए जिससे कभी कोई गम नहीं जिंदगी में जिम्मेदारी अभी कम नहीं कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं संग्राम जारी जब तक सांसें जाती थम नहीं पर हम पाए जिससे कभी कोई कि मुझे कोई गम नहीं कोई गम नहीं कि मुझे कोई कि मुझे कोई गम नहीं कि मुझे कोई. And before I go on to the last song, let me ask you, I was really happy, being present right there, watching this amazing match that is going on. And it actually made me get reminded of my college days when I was an avid gamer. And especially, I've never played cricket on a mobile phone. And this game is so awesome, man. Really kudos to all of you people. And let me ask you this one question. Who do you think is going to win this? I cannot hear you. Who do you think is going to win this? This beautiful trophy right there. What? Okay, may the best team win. And this song is specially dedicated to them. Here goes. Hit it. I and I, Rastafari. Check. Rastaman, छाया माया जाले की बदल गया इंसान ह्यूमैनिटी is one of the कदसी बाबेला माया negativity बिठाने लगे हिंदुस्तान spitfire बारिशों के बावजूद बेखूब खिलती आइरिश चुनौतियों का सामना में डेविड तू गलायत पनौतियों को डालू रेगे रागा माफिन लायन cause मंजिल मेरी माउंट सायोन हर जगह जगह नफरतें मिलावटें अच्छाई में सच्चाई में जो हाथ की सफाई भाई भाई की लड़ाई पूछो कैसी नौबत आई भय में लिखने लोगों ने बेवफाई देखो एग्जाम सीज़म but tell me let's a man kitchen misinformation we don't need them brands for no reason life तेरी और beat तो चाबी की तबेला Rastaman छाया माया जाले की बदल गया इंसान ह्यूमैनिटी is one of the कदसी बाबेला माया negativity मिटाने लगे हिंदुस्तान बम शिव शंभू Rastaman छाया माया जाले की बदल गया इंसान ह्यूमैनिटी is one of the कदसी बाबेला माया negativity मिटाने लगे हिंदुस्तान आजकल से करो जो रैपरों को लगते ghost writer internet influencer viral Wakamuna propaganda son you wanna Michael Sana kinda truck and get a title got the flex set to hit me बक्सों में केकड़े फेफड़ों में hit ना motivated बस ये एक दूसरे को खींचते beefing after beef लौंडे बनते deep but you know सीखी ये mister practice what you're preaching hip hop is love join the awakening pick up people and a breath them शीशों के जो कर दूसरों पे पत्थर ना तू फेंक पे Rastaman छाया माया जाले की बदल गया इंसान technology is one of the कदसी बाबेला माया negativity मिटाने लगे हिंदुस्तान here we go Rastaman छाया माया जाले की बदल गया इंसान technology is one of the कदसी बाबेला माया negativity मिटाने लगे हिंदुस्तान no fascism I am rebel renegade I am revolution no racism no fascism I am rebel renegade I am revolution no racism no fascism I am rebel renegade I am revolution no racism no fascism I am rebel renegade I am revolution. Thank you so much for having me here and may the best team win this amazing trophy. Thank you so much. Good night.
EPR is such a vibe. I'm still dancing a little bit. You know what I love about it also? कई बार एक आर्टिस्ट की अच्छी पहचान और असली पहचान ही होती है. You know when you're waiting for 6-7 hours, you come in there, starting से ही आते ही भागना शुरू कर दिया. You see the audience in front of you and you do your thing, and that's super respect for an artist like this. Big तालियां for him, man. You know, sometimes you can say, okay, my audience थोड़ा सा कम हो गया है, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए? No, a real artist is exactly this, and that's what it should be. So give it up for him. और अब real question is, who's going to claim glory? As he said, who's your pick? Krishan, I'm going to ask you before I say, is it going to be New York versus Dubai? Their formula strategy. Who's your pick? I'm very diplomatic. I want both teams to ऐसा win. नहीं It होता, should जल्दी be a बताओ. draw. Who's going to win? जल्दी बताओ. New York. चलो ठीक है, न्यूयॉर्क आगे चल रही है, देखते हैं. बट बाकी तो इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स. कौन बाजी मारता है? We're going to see you in a bit. Take a short break and come right back. All new Pulsar Mania's here. Maniacs Wanted. Salil, do you know? Yeah. For the last 11 days, 60 matches have been played to experience this one gigantic match. But this isn't exactly a match. It's the ultimate clash, the battle of the giants, the war between the champion athletes of the e-cricket world. कौन जीतेगा? New York Apes या Dubai Vipers? We're not sure yet. Dubai Vipers versus New York Apes के fans को क्या लगता है? See, already when we had the influencers, 2:1 था. यहाँ पे भी उड़ती उड़ती खबर आई दुबई की. Nobody wants New York to win or what? आपको क्या लगता है? What do Really? you think, Salil? They're 6-0. They've not lost in 6 matches. My money's firmly, I mean, my love is firmly on New York. All right, please welcome the two superstar teams of GPL. Up first, give it up for the New York Apes. Apes! Woo! Yeah. Congratulations, guys, for making it so far. You're in the finalists. That's amazing. Second team, put your hands together for Dubai Vipers! For the very first time, the last time they walk in like this, आखिरी बार ऐसा होने वाला है. 6-0. आप लोग पहले शायद अंडरडॉग थे, आप लोग आराम से पहुंच गए. आधे घंटे से या 1 घंटे से हवा खा रहे हैं. ये तब से लड़ाई करते जा रहे हैं और ये जीत गए हैं. कैसा लग रहा है? थोड़ा सा वो होता है ना, मोमेंटम शिफ्ट हो गया है. ऐसा लगता है आपको? पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस स्टेज पे आज खड़ा हूँ. जी. और दूसरी बात, ये फाइनल है, इसको भी अच्छा करने की ट्राई करेंगे. मोमेंटम उनके पास है तो हमारे पास भी तो है. अरे आप तो 6-0 सर, आप तो अभी भी ट्राई बोल रहे हो. ये तो कब से बोलते हैं, अरे हम तो जीत के जाएंगे. इनफैक्ट क्रिस्टान, लेट मी टेल यू व्हाट ही सेड वाज कि अगर हम लोग क्वालिफाइंग से थोड़े आगे चले जाए तो कब तो पक्का जीत जाएंगे. दिस इज व्हाट ही हैड सेड. है ना, आपने ये बोला था कि नहीं? I उड़ती love the उड़ती खबर आई थी. confidence. हाँ तो सर क्या लग रहा है अभी आपको? ट्रॉफी लेना है बाकी चने थोड़ी ना खाने आए हैं. वो तो नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम है. आपको लग रहा है थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज है क्योंकि पिछले आधे घंटे में आपने 2-2 मैचेस खेले तो हाथ ज्यादा गर्म है आपके? सही मोमेंटम बना हुआ है बट आवर जॉब इज नॉट डन येट. बिल्कुल. यू हैव टू बीट द टीम सो फार दैट इज द फेवरेट. सो गुड लक गाइस. आपके भी उतने ही सपोर्टर है. मैं इनके साथ सपोर्ट में जा रहा हूं. मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ी मेरी सपोर्ट की जरूरत है. हमने ब्लू भी पहना हुआ है. सो राइट नाउ फॉर द एनालिसिस ऑफ द मैच, किसका पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है? रोशन एंड चेतन, ओवर टू यू गाइस मैन. Chin up, heads held high, all eyes on the trophy with their feet on the ground. Because it is the big final and it's time to make it all count. For one last time, hello and welcome to Jet Synthesis Presents the Global E-Cricket Premier League on Sports 8 and Geo Cinema. And it is the ultimate clash, the big final. Joining me along is Chetan. Hola Chetan, we all were gearing up for this. I mean, last 11 days, over 60 matches and here it is. 12 दिन का सफर पूरा करके हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं. एक टीम होगी विजेता
GEPL की पहली ट्रॉफी की। Well, incredible last couple of matches. Remember, we did get that first draw in the final day. I mean, we weren't expecting that on the cards, but in the end, the Dubai Vipers are ready to take on the New York Apes in that all-important final. You know what? The knockouts throw these unprecedented things to you. Pressure का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, और यही हमें देखने को मिलेगा. And I am all set. Like, I just can't wait for the first ball of the final. These two teams deserve to be here. Then, of course, we will be building up on that game. Remember, Dubai Vipers and, of course, New York have played each other twice in that league stage. One win with New York and one win with Dubai, which makes things pretty even. Yeah, absolutely. And both sides chased in that round robin league stage, and both sides won comfortably. तो आई वुड से कि उसमें हम ज्यादा ना पढ़ें तो अच्छा है. नॉकआउट्स बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गेम है यहाँ पे. प्रेशर, हाई इंटेंसिटी प्रेशर है यहाँ पे. एंड आई थिंक व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट, should I say 3 games or 4 games? What we have seen in the first 4 games was also very, very unpredictable. And let's see what happens now. Well, then, of course, it is that big final. Remember, this is what these teams have been playing for. What an incredible run for Dubai Vipers. New York Apes will be careful now because Dubai Vipers, the crescendo is just rising and rising. Oh, absolutely. And you know what? New York winning 6 games in a row. After 6 games win consecutively, उनका जो confidence है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगा. And you know what? These are the players who have to do the job for them. Neta, Razan, Jetu, Jitu, JD and Kamal. Kamal, obviously, one of the most important players for them in that power play. But Netaji, उनको हम बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते. In sparkling form, of course, Kamal and the likes of JD, the captain, has certainly led from the front. We'll have a look on the other side, of course, for Dubai Vipers. Back-to-back victories. Boom, the kind of confidence which they are carrying is incredible. Yeah, absolutely. 6 consecutive wins for the New York Apes. आप इस तरीके का confidence लेके ही जाना चाहोगे, which is going to be a huge final for you. And you know what? They have been playing as a team together. Then, of course, we have a look at the Dubai Vipers while we are talking about it. Now again, Manish and Mukesh are there. Does the question finally come? Are these two gentlemen going to win it for Dubai Vipers? Well, one of them has to be the player of the tournament in my particular opinion. They have been phenomenal with the bat and with the ball. लेकिन यहीं पे difference दिखेगा हमें दोनों side में. Yes, Roy, Vamsi, Harbhajan, Vijay, they have played the support role. But is it going to be a victory of 2 players versus New York, a team which has actually played like a team? Or yahi, I think, is going to be the key battle between these two sides. We, of course, will have to wait and watch if the sands of Dubai can actually rise higher than the skyscrapers of New York in that final. But then, of course, we have a look at that players to watch out for because, you know, there have been such incredible performances end-to-end throughout this. And then it is Neta, the individual, of course, the phenomenal player who has contributed with the bat and the ball. या मैं पुराने पे तो देखना ही नहीं चाहूंगा, सिर्फ आज की ही बात करें. नेताजी has been absolutely brilliant with the bat, and Mukesh, he has single-handedly pulled his team into the final. तीनों matches में, I'm saying 3 matches, तीनों matches में with the bat, with the ball, not to mention in the captaincy role as well. Then, of course, we have been speaking about how crucial it has been today. Like you say, not taking the past games into consideration. But do you think the first 2 overs, if they have around 30 runs on the board, it is a move towards the winning side? Yeah, we have seen the power play being imported in both innings of the match, in all the matches in this knockouts day, the GEPL finals day. I think that's going to continue. That trend is going to continue. We'll have to wait and watch if the trend continues. For now, we are all ready for the toss of the final match. Let's go down to our host Salil and, of course, the captains and the umpire for one final time. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. Piyush, hey, I was just on Lenskart. ये जो price है $999, right? नहीं करण, रुपीज है. I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्या? करण, ये बढ़िया प्राइस है. It's only because we don't have middlemen. 90,000? आप कहीं और से ले लो. 80,000. I'm going. Bye. अमीरों की हाई लगेगी तुझे. फैक्ट्री वाले प्राइसेस, नो मिडलमैन. लेंसकार्ट, डाउनलोड द ऐप. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं.
It was a picture in contrast, Chrisann. The Dubai team was huddled there, making strategies. The New York team has not moved from this position. ऐसे ही बैठे हुए थे. You know, it's like as if they're in comatose state. कि हमें पता है क्या करना है. So we'll have to wait and see. Can we have the two captains here for the toss, please? For one final time, a big round of applause, ladies and gentlemen. New York Apes and Dubai Vipers. There's a lot at stake here, including prize money at stake here also. अभी बहुत कुछ होने वाला है. India, it is time to do the most epic toss ever. The first ever toss for the finals of GEPL. So umpire sir, coin wale babu, zara coin le आइए. अरे sir, you have come already so fast. Today you are running to go home. Come, let's toss the coin. Call. मैंने डिसाइड किया कि न्यूयॉर्क कॉल करेगा आज. चलो आप कॉल कीजिए. हेड्स. ओह सस्पेंस तो देखो. Oh my God. क्या है सर? It is heads. We will bowl first. You will bowl first. सब तैयार. और कुछ बोलने की जरूरत नहीं. गुड लक सर. पहले बैटिंग कर रहे हो आप. मुझे पता है कि आपको ये नहीं करना था. नहीं प्रिपेयर है अपन सबके लिए. सबके लिए. कोई स्ट्रैटेजी है? वो मैच के बाद पता चल जाएगा. ओह. सर फर्स्ट और सेकंड में काफी पैसों का फर्क है. डोंट लूज. अपन फोकस ही मैच में करेंगे, वो सब बातें देखा जाएगा. अरे वेरी गुड. वेल डन. तो भाई कैप्टन्स ऑलरेडी टॉस कर चुके हैं. देखना है कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है. काफी वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं. एनालिसिस चल ही रहा था कि टॉप 3 प्लेयर्स ऐसे करने चाहिए, 30 रन पहले 2 ओवर में आने चाहिए. आपके लिए टारगेट ये है. तो अभी वो और एनालिसिस करेंगे. आप जाके मैच खेलना. ठीक है. थैंक यू सो मच जेंटलमैन. ओवर टू आवर एक्सपर्ट्स रोशन एंड चेतन. थैंक्स सो मच गाइस. All the best, guys. Upon Tayyare, that kind of confidence which he gives, I'll tell you, I'll take a bow, because that is the kind of approach which you want to take for a final. No matter what is thrown at you, you will emerge as a champion, is it? Oh, absolutely. And I'm just looking at the analysis we've done throughout the tournament. None of this matters. It's the final. May the best team win. And then, of course, we are all ready to kick off that finals. Let's go to our casters for one final time. It is Lucifer Raka, aka Sam, with Crips. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app or visit your nearest store. लेकिन ये पाइप चलेगा. Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. The ultimate showdown, the one which we were waiting for, the GEPL finals. इतना दिन का जो सफर था, 15 दिन का सिर्फ नहीं था, क्योंकि लीग स्टेज 15 दिन देखने के लिए मौका मिला, बट ये प्लेयर्स कब से साथ में हैं. They are trying to build that synergy. All that will come to a conclusion today, जहां पे हमारे champions, पहले champions, and that's what we need to know. कौन बनाने वाले अपने लेगेसी, कौन क्रिएट करने वाला है हिस्ट्री, right here today in बालेवाड़ी पुणे. It's New York Apes versus Dubai Vipers. एक राइवलरी ऐसी है जो as old as GEPL है. याद रखना दोस्तों, दुबई वाइपर्स इस टूर्नामेंट में आ ही इसलिए पाए थे क्योंकि न्यूयॉर्क एप्स ने अपनी बाजी एक बार हारी, एंड बिकॉज ऑफ देयर goof up they are now facing Dubai Vipers in the opponent. They are the ones who started it and they will have to end it. New York Apes ticket granted them the entry by defeating Delhi Sharks. उसके वजह से दुबई वाइपर्स यहाँ पे आई है. Exactly. ना सिर्फ क्वालिफायर्स, उन्होंने एलिमिनेटर में टीम को हरा के क्वालिफायर 2 में एक रीमैच करवा के now they are here. We have to pay respects to that. What a game they bought, and now they're standing in the final stage to decide our champions. But जी हाँ, मैं सारे जो बाकी टीम्स है ना, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा. Big thank you, because बिना ये आर्ट टीम, उनमें जो है 48 प्लेयर्स, साथ ही में उनके मैनेजर्स, उनके सपोर्ट स्टाफ, सब
I think because of them we are having such an exceptional tournament, and अब ये finals conclude होता हुआ नजर आएगा. For some it's a happy journey so far, for some might not be, but एक ख्वाब जरूर रहेगा कि वापसी करे season 2 में, and that's what I'm looking forward to. अभी हार मत मानिए, जो आज जीत होने वाला है ना सिर्फ एक टीम का रहने वाला है, but in its entirety a जीत, a victory for GEPL at the end of the day. Exactly, this is just season 1 ladies and gentlemen, और ये तो सिर्फ शुरुआत है. Yes. इस टूर्नामेंट में आपको बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने मिला, and later on you will see even more. Let's start the grand finals of Global E-Cricket Premier League. पहला ball and उसको उड़ा दिया गया, picked up in the air, sent it up to a 6. Roy इस बार बोलते कि चौका नहीं छक्का से ही काम चलेगा. This is how you want to start. They go for the bat, they go for the boundary. 2.5 crores on the line, 6 pulsars available as well, but he's been sent back. Immediately after 1-6 he's gone. पहली एक डिलीवरी के बाद सेकंड में out. You experience the highest of highs, and then the depths of despair will welcome you into the abyss. Can they climb out of this pit? Can they find their groove once again? They were reliant on Roy so much, Lucifer, up until now. Roy has been the star player for this team, लेकिन उनका पैटर्न हमेशा यही रहा है. आओ explosive तरीके से बहुत सारे runs निकालो and then भाग जाओ. But Another this time shot. he ran away a little too soon. And Very I hope that early. doesn't spell trouble for the Dubai Vipers. देखिए अभी हमारे होस्ट हमारे एनालिस्ट सब यही बता रहे थे कि it's been a victory streak जो हमें देखने के लिए मौका मिला है from the side of New York Apes. But Dubai Vipers भी कुछ कम नहीं है. जैसे ही यहाँ पे फाइनल्स में क्वालिफाई हुई है, they've been winning on a stretch, especially playing 3 games today. Exactly. They might have a chance, but Roy out होने के वजह से things can fall south. और अभी के लिए राजिन एक बेहतरीन बड़ा विकेट निकाल के controlling the over so far. Wonderful stuff. And this is what happens when you have 3 games in a single day, right? Up until now, league stage mein, the max that these teams have faced are 2 games a day. The third game, it might just bring in some fatigue. You've been doing so much cricketing action today. बहुत सारे आपके opponents आपके matches देख रहे हैं, आपके pattern को study कर रहे हैं. They might just use all of that against you. Last ball of the over. Tried it for a back point shot, but unfortunately falls short itself, जिसके वजह से double मिलता हुआ नजर आएगा और खत्म होते हुए. What a fantastic start for both the ends. It was not even a double, it was just a single. 11 runs, 1 wicket, and पहला power play खत्म हो चुका है. Now it's time for the second power play. What a start so far. I'm still in a little bit of a disarray. Feels surreal, Crips. I know, to right? have such a start. And यहाँ पे देखिए, out होते ही Harbhajan आए, not Manish. So they're saving a trump card for chance. Almost on the stumps. I think Bales को miss करते हुए गया. Nice dot ball coming in from Jitu, but I'm pretty sure he wanted an out over there. Yeah, you could see that face palm. He really wanted that. Yeah. अगर वो रॉय को आउट करने के बाद कैप्टन मुकेश को भी आउट कर देते तो दुबई का टॉप ऑर्डर यहीं पे क्रम्बल हो जाता. Now sending it out, finds a fine leg shot, breaches through the boundaries, and एक चौका लगता हुआ नजर आएगा. Finally getting some semblance, but ये काफी नहीं रहेगा दुबई वाइपर्स के लिए. They need to find a lot more. The captain Mukesh, उनका विकेट मिस होते ही he will make everybody regret that. Good shot. फील्डर के जस्ट पार जाते हुए, लेकिन पेस नहीं है तो आराम से पकड़ा जाएगा. And after conceding a dot ball, Jitu has somehow managed to stabilize this economy. New York Apes एक बहुत ही शानदार विकेट निकालने के बाद उनका मोमेंटम थोड़ा हल्का होते हुए लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मुकेश का विकेट निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होएगा. Up in the air, reaching boundaries again. एक और बार चौका लगाते हुए. अगर इस ओवर में दुबई वाइपर्स are able to get to 13 overall score, it's a nice recovery after that first wicket loss. Exactly. And उसी के लिए try करेंगे. Jitu has to vary things up. इस बार काफी कम लेंथ से डाल रहे हैं. Oh, and that must hurt if you were in an actual cricket ground. Last delivery of the over, the 30 जो हमने बात किया था, उसका चांस तो बहुत दूर है. They are sitting at 21, only a 6 which can push to 27. But chances क्या मिल सकता है? Looks to a full end delivery, मार के यहाँ पे gap ढूंढने का मौका, but fielder आएंगे. He dives, puts a stop to it. 3 रन तो यहाँ पे मिलना चाहिए. So it's going to be 13 runs off the over, pushing the score to 24. Not bad considering how they started.
30 runs would have been ideal at the end of the power play, लेकिन I'm pretty sure that a single boundary can get them back in the momentum. Power play खत्म, fielding adjust होगी अभी, और definitely यहाँ पे न्यूयॉर्क एप्स जो है कुछ ना कुछ ट्रैप लगाने की कोशिश करेंगे. Up until now, न्यूयॉर्क एप्स ने अपना bowling order जो है वो starting के 3 ओवर में तो इतना चेंज नहीं किया है. But now comes Jeetu and the ball is in the air. This could be either a boundary or a catch. It goes all the way across. Fielder वहाँ पे देख रहे थे, अगर मिल जाता he could have flown up like a superman. But now it's a flying 6 जो यहाँ पे Vipers निकाल के दिखाएगी. Now New York's decision of choosing bowling. टॉस उन्होंने जीता, क्या फायदा दिलाएगा? पावर प्ले खत्म हो चुका है और उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे एक छक्का देखा है. But जीतू उसके बाद just running between the wickets, keeping it safe. And that's how it should be. 31 runs so far. Oh, the pressure is really mounting now. Yeah, I mean, especially after Roy going out, यहाँ पे अभी तक stable करने का मौका ढूंढ रहे हैं. जाएगा इस बार towards back point and third man. But still a double. And Jeetu is so okay with taking all these risks. Look at the amount of times वो Yorkers डाल रहे हैं, full length ball डाल रहे हैं. He really edge हो सकता है and then a catch. Exactly right. So he is okay with a couple of boundaries as long as it results in another wicket. A big shot, but it has found the gap this time. No fielders to intercept. And एक और चौका लगाते हुए जीतू के इस ओवर में एक बेहतरीन रिकवरी दुबई वाइपर्स का होती हुई. But it is very crucial for the entire team to right now step up for even Apes. Because पहला विकेट निकालने के बाद it seems like it's Dubai Vipers who are finding the momentum. Powerful pulsar boundary. And even the audience is enjoying this one. It's the final game, Crips. Huh? It's the final game. It's the final game. They're dancing to the drum of the. They're dancing to the beat of the drum. But can they make the Dubai Vipers? Can they make the Dubai Vipers dance to the beat of their own music? Can they make them question their own decisions? Last delivery of this over. Score still at 37. Quite low considering you've had so many boundaries in this over. It's a very slow ball, but still finds a way to put it across the boundary. एक और बेहतरीन छक्का लगता हुआ. Dubai Vipers, what are they on? Feels like they're riding the high of the Pulsar NS125. और सैम हम लोग तो जस्ट ये बात कर रहे थे कि पावर प्ले खत्म होते ही उनके पास सिर्फ 24 रन थे. We thought it wasn't enough, but what do you feel now? You think they've made up for it? They have recovered really well in that third over. Second over, it was a good recovery. Third was the biggest. But ab, just step in kiye. It is none other than Netaji. This man made a hat-trick. Can he find any chances today? Point पे डालेंगे boundary के तरफ, but fielder भाग के आएंगे deep से. Put a stop to it. And you can already see the change in strategy between Jeetu and Netha. Jeetu risky balls डाल के boundary risk कर रहे थे, hoping to get a wicket. लेकिन Nethaji instantly switch up कर देते हैं. Good length ball डाल रहे हैं ताकि वो इनका run rate run rate slow करा सके rather than going for the wickets altogether. Steps ahead. Fielder तैयार भाग के आ रहे हैं नीचे. Can he find it? Yes, he dives for it. Netaji finds another wicket for New York Apes. Dubai Vipers मुश्किल में नजर आ रहे हैं. कप्तान साहब वापस dugout में. Mukesh, that's a big wicket to be found. A big wicket powered by Lenskart, and that's the magic of Nethaji. ना ही उनने कोई full length ball डाला, ना ही risky Yorker. Decent ball पे ही wicket निकाल लिया. The dangerous man, and he delivers. And he's taken out the danger man from Dubai side. Yes. The man who stands in the pitch बहुत देर तक टिके रहते हैं, keeps finding boundaries. Now it's all up to Harbhajan as well as Manish. That could have been dangerous again. Ball just middle stump के ऊपर से जाता हुआ. 45 runs so far. And that's the dangerous thing about Nethaji. कभी-कभी वो सीधा stumps के line में डालेंगे, कभी-कभी outside the off stump line. And that is what confuses the batsman most of the time. Should be getting another double here इस चौथे बॉल पे. And you can see JD बता रहे हैं there's another wicket. निकाल सकते हैं हम. मौका मिल जाएगा. You are the man. You are the dangerous man. Already Mukesh को हटा चुके हैं. Now it's time for Harbhajan and Manish as well. Trying again to play a shot, but ज़्यादा दूर नहीं पहुंचेगा. Just another double. Yeah. नेताजी के खौफ से पूरी की पूरी दुबई की सेना थोड़ी शांत पड़ गई है. Are we going to see just a score reaching above
हाफ सेंचुरी, क्लोज टू अंडर 60. वैसे अभी के लिए फील हो रहा है. जेडी का ओवर अभी भी बाकी है. शॉट डिलीवरी, लेट रिएक्शन एंड द ओवर इज डन. 6 runs and a wicket. One of the best overs and ये finals में करके दिखाया नेताजी ने. Exactly. इतना सारा प्रेशर था नेताजी के ऊपर. He had to live up to his own expectations which he set for himself, and man oh man, this guy can deliver. JD in the last over, a short delivery coming through. Fielder तैयार. Unfortunately bowler के हाथ में नहीं आया. There could have been a chance for an out, but nonetheless just a single. ये फिर भी अच्छा है यार. लास्ट ओवर जस्ट शुरू हो रहा है and you've kept the Dubai Vipers to less than 50. As long as you can get this done with under 60, the New York Apes should be fine. Steps up, goes in for a shot, but 6 stroke खेल के यहाँ पे एक डबल निकाल के दिखा देंगे. हरभजन trying to bring his team alive. 17 रन जड़ चुके हैं. With this double he gets it to 19 in 10 deliveries. But उनके साथ जो है अभी के लिए मनीष, he's not made it towards the striking end. अभी तक उनका जो है हाथ जमा नहीं है. And that is where trouble brews. If he changes that strike, मतलब इस आखिरी ओवर में रिस्क उठाना होता है. Misses again. I don't know about changing strikes, लेकिन यहाँ पे जेडी अपनी bowling stance change कर रहे हैं बार-बार. 52 runs only so far. ऐसे दुबई वाइपर्स मौका नहीं दे सकते. This is a very decent and chaseable target. Another dot coming through. JD, such slow deliveries. Reaction time में ऊपर नीचे करवा रहे हैं. And to imagine a pacer finding all these slow deliveries. Exactly right. मैंने जेडी को कभी भी 130 के नीचे सोर करते हुए नहीं And देखा now है. he's only at 100. Again! What is this? Harbhajan is just not having a good day today. Last delivery and इस ओवर में मिला सिर्फ 3 रन. Absolutely abysmal performance. Running up JD. It's going to be a shorter delivery. Connection मिलेगा. जाएगा ऊपर. Trying to find a way to its boundary and जी हाँ, आखिरी बॉल पे 56 runs in the overall innings. 5 ओवर में it was only 56 for the grand finals. What a brilliant couple of last overs. नेताजी पिच पे आए, 6 runs दिए उनने with a wicket, and then this JD with 3 dot balls. What is that performance? Last के 2 overs में New York की team literally just came alive, man. They were something else. 3 runs, 3 dot balls, and then a 4. 7 runs of the over. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app. लेकिन ये पाइप चलेगा. Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. New York Apes, how did they get to their 18 point? Delhi Sharks को बारी-बारी से विकेट निकाल के ऑल आउट करके जीता था. Now it's time for Dubai Vipers to do one such wonder. जैसे वो क्वालिफिकेशन चांस मिला न्यूयॉर्क एप्स ने जो हरा के दिल्ली शार्क्स को चांस दिया है दुबई वाइपर्स को, दे कैन मेक दैट हैपन. पहली डिलीवरी में एंड ये देखिए नेताजी इज डाउन. पहला विकेट. रॉय को एटलीस्ट छक्का लगाने के लिए मौका मिला, बट नेताजी इज गॉन. द फर्स्ट बॉल इन द सेकंड इनिंग्स एंड वाइपर्स फाइंड द विकेट. And that's exactly what they were looking for. आपने अभी मेंशन किया how they got to this place, what they did in their last game before the finals, and they're doing it all over again. देखिए नेताजी अभी के लिए बैलेंस बैट्समैन है, बट जिस हिसाब से पूरी न्यूयॉर्क एप्स को बैलेंस करके चल रहे थे वाज जस्ट अमेजिंग स्टफ. बट अब जैसे नेताजी जा चुके कमल ऑन स्ट्राइक, अ लिटिल बिट ऑफ अ मिसफील्ड. 3 रन तो जरूर भागने के लिए मौका मिलेगा, बट हरभजन, व्हाट अ विकेट. I think this is exactly why they sent नेताजी up front. उन्हें मालूम था कि हरभजन कुछ ना कुछ वेरिएशन लेके आएंगे, and that's exactly why they wanted to keep JD and Kamal alive. नेताजी का लॉस हुआ, but चलेगा, कोई बात नहीं. That's a loss that New York Apes can recover from. अब JD, उन्हें आखिरी ओवर बॉलिंग की साइड पे तो बहुत ही धूम मचा दी थी, लेकिन इस बार उन्हें वापस से कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा. And even if he plays it safe,
आई थिंक वो बहुत ही आराम से ये टारगेट चेज कर सकते हैं. Yeah, it is still an easily doable target, chaseable target, but again, ऐसे छोटी मोटी गलती नहीं कर सकते. Power play के पहली बॉल में second innings, you have all the credits for you, but you still make a mistake. 57 runs is all you needed in 30 deliveries. Exactly, and you know for a fact कि दुबई वाइपर्स इसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी डॉट बॉल्स के लिए और तुम्हें स्लो डाउन करने के लिए बॉल्स नहीं डालने वाले. They will take risks. They will try to get your wicket. A very slowed down New York Apes. They're unable to run up everywhere. They're unable to climb trees. They're unable to literally shout out क्योंकि वो पहला विकेट गवा चुके हैं. Still not found on single boundary and Harbhajan nice close towards the leg stump, but a dot. However, आखिरी डिलीवरी इस पावर प्ले के पहले ओवर में. प्रेशर माउंटिंग ऑन मैन. पहले ही बॉल पे विकेट निकाल के आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया. एक बार फिर से जेडी को ऑलमोस्ट आउट करने की अपॉर्चुनिटी थी, एंड दिस वन इज अगेन एट कैचेबल लेंथ. ही मेक्स द डाइव, ही टेक्स द कैच. 2 wickets in a single over. One to start the over with and one to end the over with. नेताजी गए, जेडी गए. Kamal still on strike. Razin walks up into the pitch. 2 big wickets गवा चुके हैं. Just similar to what Dubai Vipers had to face. Roy गए, मुकेश गए. Now JD, नेताजी gone. लेकिन एटलीस्ट मुकेश तो काफी टाइम तक रुक गए थे यार. Exactly. दूसरे ओवर तक तो टिके थे. He made close to 20 runs, I guess. Exactly right. 20 के ऊपर टारगेट पहुंचाया था उन्होंने. And now you can see Mukesh telling his teammates, देखिए पावर प्ले में already हमने 2 विकेट निकाल चुके हैं. There is still a lot more that we can do. Second power play अभी चालू हुआ है, and you can see Apes playing for grounded shots. They have to keep themselves safe. Runs नहीं मिलेंगे तो चलेगा, वो रिकवर कर सकते हैं बाद में, लेकिन विकेट्स एक बार चले गए हाथ से तो वापस नहीं आएंगे. अगर इस बार आपके विकेट्स जाते हैं हाथ से तो ट्रॉफी भी निकल जाएगी. Stakes very high, ladies and gentlemen. 2.51 crores on the line over here. 2.51 crores ट्रॉफी, साथ ही में हर एक खिलाड़ी को पल्सर NS 125 मिलेगा यहाँ पे. And that is what they're playing on. विजय प्राप्ति करेंगे अपने सेकंड डिलीवरी में. It's a dot. Still has a long way to go. You can see on every single delivery, ना सिर्फ ऑडियंस सेलिब्रेट कर रही है, but even the side of Vipers. On the other end, माहौल जो है थोड़ा सहमा हुआ है for the side of Apes, but with this boundary, चौका लगा के, they might try to bring it back. Run rate very recoverable, लेकिन ये बाउंड्री का जो खुशी है उससे एटलीस्ट उनका प्रेशर कम होएगा. At least they will have a little more faith in themselves. They will attempt those dangerous shots, and even if they don't, they will survive. Oh, trap ball. No. This is the classic trap ball, and उनने ये वाला at least इतना खतरनाक तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया कि कैच आउट हो जाए. Keeper couldn't get it. If keeper got it, I think वहाँ पे जो extra run मिलता था that नहीं would have मिलता. been GG. Yeah. But now still keeping it as a doable target. 44 runs in 20 deliveries. Doable, still there. Chance मिल सकता है. Last 2 deliveries of the power play. Not again a again. catch. Razin just played one ball, got a single, ran and walked back home. गए वापस. There's snakes in the grass over here. Watch your step. दिल्ली शार्क्स अभी प्लेयर स्टैंड में बैठ के देख रहे हैं. आपने हमें ये किया था, and this is repetition to you guys. आप सबको यही हो रहा है. That's how it feels. That's how it exactly feels now. New York Apes on a wonder run, especially in the second half of GPL League stage. But अब उनका जो wonder run है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. Another one in the air. Yes, Another one gone. 2 wickets back to back. The Vipers are advancing towards the victory. Momentum unstoppable. Feelings at an all-time high. सबको एक-एक करके हटा रहे हैं. एक आखिरी विकेट बचा है. पावर प्ले खत्म हो चुका है. Wait, what? It's just 2 overs? I lost track of time. Did they just get 4 wickets in 2 overs? Absolutely nuts. And they haven't even crossed the 20-run mark yet. If they win by defeating them, and they keep them at a run rate of less than 20, oh my god, this will be the most dominant victory in the league so far. आखिरी विकेट पे खेल रही है न्यूयॉर्क एप्स. And the fact that you do it in the finals,
My goodness, what a statement to make. मोमेंटम लेके चल रहे दुबई वाइपर्स. शॉट डिलीवरी. They will play only grounded shots. जीतू एंड जीतू, ये दो लोग को कमान संभाल के जीत के तरफ लेके जाना पड़ेगा. कैप्टन मुकेश ने जबान दी थी, अगर हम यहाँ पे आ गए तो ट्रॉफी लेकर ही जाएंगे. और फिलहाल they can feel their arms grasping the trophy almost. They're so close, they can smell it, they can almost taste the victory. Oh, dangerous Yorker. New York will only play on grounded shots as of how I know them. क्योंकि आखिरी विकेट पे कोई भी lofted या even stroke shot भी नहीं ट्राई करना चाहेगा. And that's why Vamsi is going for Yorkers again and again. He wants to tempt them. मिस करेंगे तो सीधा स्टंप पे. Doomed if you do, doomed if you don't. All the pressure on you. Yorkers and full length balls only by Vamsi. He is looking for blood. Harbhajan, पहला power play over, 2 wicket. Then comes in Vijay, power play over, second one, 2 wicket. Boom. And done. Done. It's just Jeetu and Jeetu. 38 runs in 15 deliveries. Boundaries लगाना ही पड़ेगा. There's no doubles that will work. Oh yeah. At this point, even the run rate pressure is not on them, right? Yes. At least पहले तो वो run rate तुम्हारे control में था, अब तो वो भी नहीं है. Oh, these two Jeetus will have to do something short of a miracle over here. Leg byes will just get a single of it. किस मुकाम पे आ चुके हैं यहाँ पे? Cripps, I would have never thought a finals will come down to a stance where one team had did this to some other team and now they are facing a similar fate. Playing on one single wicket. New York Apes started this and now they are about to be finished in the same exact fashion. New York Apes बोल रहे हो कि क्यों यहाँ पे हमने दुबई वाइपर्स को चांस दिया? Why did we give them this ticket for the finals? And chance था. Delhi Sharks हमारे साथ आ सकते थे. There couldn't have been another team. And to think that Dubai Vipers were looking shaky in the previous match. Yeah. To think that they almost lost. They went for a tie. And now what is this? ये कौन सा दुबई वाइपर्स है जो इतने कम रन में 4 विकेट लेगा? पावर प्ले खत्म हो चुका है. पावर प्ले के तुरंत बाद 7 ही रन अभी तक इन्होंने लिया है तीसरे ओवर में. आखिरी डिलीवरी या यॉर्कर लेंथ just pushed off towards the point. Nothing else. I don't think you can do anything else, Lucifer. You're running Double out of off the options. over. 9 runs. That's all they got, pushing the score to 23. With a loss of 4 wickets, 4 wickets गवा चुके हैं. 3 ओवर खत्म हो चुके हैं and score सिर्फ 23. Pressure mounting on. You need runs and you need to conserve wickets. At least पहले एक problem जो थी वो नहीं exist कर रही थी for the side of the New York Apes. But now they are trapped on both ends. The deadly duo, Mukesh और Manish, अब आ चुके हैं. Mukesh telling Manish what to do and ध्यान से Manish वो spells डालते हुए. लेकिन एक दूसरा deadly duo है. I mean, they haven't been proven to be deadly so far, but Jeetu and Jeetu. Exactly. They have to be as dynamic as possible. As magical as possible, because at this point, honestly, Sam, I think only magic can save them. 11 delivery बाकी है, 33 runs to be done. Still just grounded is what New York is playing on. उनको पहला झटका लगा जब उनके player नेताजी, who was having a fantabulous run, unstoppable, unbeatable in a balanced role. उसके बाद गए JD, उनकी captain हट गए, and that was a bigger dent. And then fall one after another, Razin as well as Kamal. Yeah, they were falling like flies. Getting blown away like a pack of cards in a hurricane. Mukesh बता रहे अपने टीममेट को, मनीष, गेम हमारे हाथ में है. फिसलने नहीं देना है इसे. This is our winning stride. Champions कहलाने से एक कदम दूर है. एक कदम छोड़िए. They're just 8 deliveries away. You can tell by their faces that they just want to grab that trophy right here and now. And they most likely will, unless the Apes do something amazing. And for some, and it's an all-out. They have stood it. New York Apes, यही पे उनका सफर खत्म. Dubai Vipers are Jet Synthesis present Global E-Cricket Premier League champions. What a wonderful journey they have had. They almost did not make it to the finals. Qualifiers में किसी और के दम पे आके पहला ड्रॉ निकाल के ट्रॉफी हासिल की है यहाँ पे दुबई वाइपर्स ने. They
win against all odds. All odds. They were the fourth team to qualify, and their qualification was based on New York Apes, their final rivals. जो भी stage में है, the champions of Jet Synthesis presents Global E-Cricket Premier League. What a way to win! मुकेश बोले थे उन्होंने. He said, if we qualify, हम ट्रॉफी उठा के जाएंगे, और उन्होंने अपनी दिखाया. सही करवा दी. This is not an easy task to do. He stuck to his words, and he will lift that trophy in the most glorious possible way. And now, ladies and gentlemen, it is my great honor to let Salil and Krisan carry over and crown these champions. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app now. लेकिन ये पाइप चलेगा. Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. And it has happened. Aajo, bhai log, come in front. Well done, boys. Well done, well done. History has been created. Questions have been answered. The first ever E-Cricketing League has found its ultimate champion, and they are the Dubai Vipers. Big round of applause. Congratulations, guys. Please come here. Come forward. Domination is their style, and I love how these guys just have a small little smirk. The underdogs have truly proved themselves. Arey, you come in the center, brother. ये तुम्हारा time है. Congratulations, guys, on becoming the first ever winners of Jet Synthesis presents GEPL Global E-Cricket Premier League. रगों में क्रिकेट का जोश और दिलों में लव फॉर ई-स्पोर्ट्स. आगे जाने से पहले भाई, before we go into anything, एक लाइन तो बोल दो, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा. कैसा लग रहा है? बोला था ना ट्रॉफी अपनी ही है. We're going to let the winners celebrate. हम लोग नहीं हमारे post match ceremony के साथ in just a bit. Let them savor this victory. Commiserations. New York के लिए बहुत तालियां हो जाए. Boss, they played really well. कई बार ऐसे होता है फाइनल में. Good job. But we'll take a short break. We'll come right back. There's unfortunately got to be only one winner, and Dubai it is. We'll be right back. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा. Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं.